Dear HCS family, it's the day to salute the hard work and dedication of our brothers and sisters who makes the HCS a real family with their sweat and blood. It's a day to celebrate the value of work, the commitment and the hidden sacrifices. As the Bible beautifully says, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men. Yes, we appreciate all your hard labor. And dear friends, the work of our hand, the sweat of our brow, it builds our character, reveals purpose in struggle, and adds meaning to life. Wish you all the best. God bless you. Good morning, everyone, and welcome to the special assembly organized to celebrate Labour's Day. The scripture says, "Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you." Lord, your word is so fulfilling. Though we are going through such difficult times, your promising word fills us with strength. It gives us the hope to start afresh, to start anew. We thank you for the joy and happiness you bring into our lives every single day. Let your light shine upon us always. Amen. Please join your hands and close your eyes for the morning prayer. We thank you, God, for this new day and for the gift of life. We pray for ourselves, our parents, relatives, teachers, friends, and every person on earth. Assist us in performing our duties, that we may never be indifferent or careless, but be always diligent, conscientious, and disciplined. Watch over us, Father, all through this day, and lead us to do what is right, true, and good. Protect us from every harm to soul and body. Help us this day to do all that you would like us to do and to avoid doing whatever is not pleasing to you. May your peace fill our hearts, our homes, our schools, our country, the whole world, and all universe. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Good morning to everyone present. Uthamena hi siddhyanti karyani na manorathe nahi supattasya singhasya pravishanti mukhem vegaha, which means work gets accomplished by efforts, industry, not merely by wishing. Animals don't enter a sleeping lion's mouth by their own. Thank you. कभी धागा बनाता हूँ तो कभी कपड़ा बनाता हूँ। मैं मजदूर हूँ जो हर घर के लिए ईंटा बनाता हूँ। लहू मेरा पसीना बनकर माथे से टपकता है। मई की धूप में जब धूप से रिश्ता बनाता हूँ। समाज के हर निर्माण के लिए मैं ज़रूरत हूँ। मैं मजदूर हूँ, ईमानदारी और मेहनत की मूर्त हूँ। मत हारना, तू कभी कोशिश करने से बड़े से बड़ा पर्वत भी हिल जाएगा। सब्र रखकर मेहनत करता जा, एक दिन इसका फल भी मिल जाएगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, ईश्वर मुझे तब तक काम दे जब तक जीवन समाप्त ना हो, और जीवन दे जब तक मेरा काम समाप्त ना हो। आज के समय में हम सबको श्रम का महत्व समझ आ गया है। श्रम एक ऐसी प्रार्थना है जिसका उत्तर प्रकृति देती है। इस महामारी ने हम सबको सिखा दिया, ना कोई काम छोटा होता है, ना कोई बड़ा। काम करने वाला बड़ा होता है। मेहनत के दिए जलाए जा, सफलता के परचम लहराए जा। दुख सुख तो आते रहेंगे जीवन में, तू जीवन को आगे
बढ़ाई जा। चलते चलते थककर बैठ जाना फितरत नहीं उनकी, पहचान है श्रम, कर्म है पूजा उनकी। आपने ही तो हमें सिखाया, सोचो मत साकार करो, अपने कर्मों से प्यार करो। आभारी है हम आपके, आप हमारी आन है, शान है, आज का दिन आपके नाम है। मजदूर नहीं तो कुछ नहीं, विकास का कोई माप नहीं, हम नहीं आप नहीं। मुट्ठी भर मिल जाए अगर तो भरपूर है, खुशियों का सौदा करने को मजबूर है। ये आम लोग नहीं, जज्बे में इनकी खुददारी है। आज मजबूर बैठे हैं क्योंकि फैली एक महामारी है। मिलकर करेंगे संघर्ष, रुकेंगे नहीं, दिल से करते हैं आपका धन्यवाद। आप नहीं तो कुछ नहीं, धन्यवाद। Our eyes always want to see something having beauty, and beauty is found in art. Labor is required for art, and laborers are the people who create such art and provide the beauty we want. And so, we should always thank the laborers for